क्या आपके लिए भी होपोनोपोनो सिर्फ कभी-कभी काम करता है और जो लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़े सिचुएशंस होते हैं, वहां पर वो काम करना बंद कर देता है? सो दिस मे बी द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू आर डूइंग व्हाइल डूइंग होपोनोपोनो। और वो मिस्टेक क्या है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए व्हाइल डूइंग होपोनोपोनो? This is the video that today I'm going to discuss in. And before we do that, let me just introduce myself. My name is Vishu Bhargav. I am a law of attraction coach, a certified Ho'oponopono healer, and also an Amazon's best-selling author for my book, A Letter from Money. So let's jump into today's topic, which is what is that one mistake which should be avoided at any cost while doing Ho'oponopono, जिसकी वजह से आपको भी रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाएंगे। सो अगर आपने देखा होगा, जब हम Ho'oponopono करते हैं तो वी आर सेइंग 4 स्टेटमेंट्स: आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बट व्हेन वी से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, व्हाट हैपेंस, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं एंड व्हाई शुड आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस जब मैंने कुछ गलती नहीं किया है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो डॉक्टर ह्यूलन हमेशा पूछा करते थे अपने ऑडियंस से या अपने स्टूडेंट्स से, जो भी उनके साथ सीखने आते थे, कि हैव यू एवर नोटिस्ड व्हेनेवर यू हैव अ प्रॉब्लम यू आर ऑलवेज देयर? सो ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको अंदर जाने में, बट आस्क इट अगेन एंड अगेन। यू माइट नॉट हैव डन समथिंग रॉन्ग, आपने कुछ गलत नहीं किया होगा या आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया होगा कि ये प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, बट आपको उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा, बिकॉज वो आपकी लाइफ में है। दैट मीन्स आप उस प्रॉब्लम को देख रहे हो, वो आप सुन रहे हो, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। दैट मीन्स यू हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वट एवर अननोन और नोन रीजन इट इज देयर इन योर life. How to take 100% responsibility and what not to do. So this is the one biggest mistake that a lot of people do, is they blame and they complain. और मोस्टली हमने रिलेशनशिप्स में ये प्रॉब्लम देखी है कि किसी सामने वाले ने आपके साथ कुछ गड़बड़ किया है एंड यू जस्ट कीप ऑन ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग, एंड व्हाटएवर इज गोइंग इन योर लाइफ व्हिच इज नॉट वर्किंग, यू ऑलवेज हैव समवन टू ब्लेम इट ऑन। जब तक आप ये करते रहेंगे तब तक होपोनोपोनो कभी काम नहीं करेगा। सो यू हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू स्टॉप ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग and simply chant these 4 sentences: I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, by taking 100% responsibility without blaming or complaining. ऐसा नहीं कि एक बार बोला और उसके बाद दिन भर blame and complain कर रहे हैं. It will not work like that. Okay? And what is the most beautiful part which will start happening is you will become responsible for your life, and once you take responsibility of your life, you can choose what to do and what not to do. Apart from this one biggest mistake जो आप अभी कर रहे हैं, जो आप सुधार सकते हैं, what are the other things because of which Ho'oponopono does not work? And sometimes, however hard you try, it just doesn't work. Like वो काम ही नहीं कर रहा है, आपको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा, प्लस उसके अलावा बहुत सारी चीजें गलत गलत होने लगी है, बहुत ज्यादा और नेगेटिविटी और बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ, तो just drop a yes in the comment section. I'll cover that in a separate video, why it happens कि Ho'oponopono का रिजल्ट जो हमें चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, प्लस अच्छा होने की जगह और भी ज्यादा चीजें खराब होने लगी है। If that is your question, just drop it in the comment section and we'll take it in the next video. Till then, just keep practicing. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. But before you do it, every time for any situation, person, place or thing, just take 100% responsibility, क्योंकि वो आपकी लाइफ में है, इसलिए आपको उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड इफ यू हैव सीन द अदर पर्सन माइट नॉट बी हैविंग दैट प्रॉब्लम, एंड आपके रिलेटिव्स को वो प्रॉब्लम नहीं है, बाकी किसी को वो प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप ही को क्यों है? There must be some known or unknown reasons जो आपको अभी नहीं पता है, but later on आपको पता होने की जरूरत भी नहीं है। You just have to say 100% responsibility and you surrender and you say these words: result आना होगा, आएगा, नहीं आना होगा, नहीं आएगा, जो आपको चाहिए हो सकता है वो नहीं आए बट उससे कुछ बेटर हो जाए। You never know what is going to happen. Just trust the process and keep doing it. Stop blaming, stop complaining. Thank you.